नमस्कार। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट। और आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आपकी एज 25 हो या 55, बैक पेन और नी पेन सबके लिए एक बहुत बड़ा इशू है। और हम जानेंगे आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर संजय से। थैंक यू। डॉक्टर संजय, आप हमें ये बताइए, आज बहुत ज़्यादा इशू है ये नी पेन और बैक पेन का। एग्जैक्टली राइट। एकदम लेमैन के लिए ऐसी क्या चीज़ें होनी चाहिए, जो उनको प्रिकॉशंस होने चाहिए, उन्हें क्या उसके लिए अपनी रूटीन में इस तरह से करना चाहिए कि दे डोंट सफर। बट उससे पहले हम जानते हैं डॉक्टर संजय से कि आप ऑर्थोपेडिक्स में कैसे आए, और जो आपका स्पाइन और जो सर्जरीज हैं और ये इसने कैसे आपको अट्रैक्ट किया कि आप ऑर्थोपेडिशियन बने। ऑर्थोपेडिक्स में आने का एक बड़ा जो स्टोरी है, एट द 2000 एरा में इट वाज 10th स्टैंडर्ड के मार्क्स पे बेस पे डिपेंड करता है कि व्हाट यू सेलेक्ट करना है। आज के नाउअडेज इट इज बहुत सारे स्ट्रीम्स है, द स्टूडेंट्स आर अवेयर ऑफ व्हिच स्ट्रीम दे हैव टू गो इट। इन 2000 एरा इट वाज if I got good marks then you have to go in science, if it is a compromised marks then you have to go non science. So I got a kind of a decent marks in 10th. Although my family background is not that educated or no one was from medical field, but I got inspired by a couple of senior doctors in my locality. They used to serve n number of patients. I got inspired by them ki I should also become a kind of a doctor looking at them. After 10th, I got into medical MBBS from MGM Medical College. Further that, I worked as a casualty medical officer at a Hinduja hospital for around 1 and 2 years. And working at a casualty also inspired me that I should do some specialization. After that, I got entered into orthopedic super specialization, that is from Somia Medical College. After completing my post graduation, I worked under multiple senior doctors from Hinduja Hospital to various BMC medical colleges. Then gradually I started my practice there. आपने बोला जैसे कि प्रैक्टिस है, तो कहाँ कहाँ आपकी क्लिनिक्स हैं। Majoritarily, I'm practicing since last 12 to 13 years at Worli, because I'm born and brought up from Worli. So initially, I don't have any godfather kind of a thing. So I don't know where to start from. So this was my born and brought place. So I start my practice from Worli. So since last 12 to 13 years, I'm practicing at Worli. Apart from that, due to the, you can say, the patient demand or patient's request, some people used to come far away places from maybe 3 to 5 kilometers away from my Worli, Dadar or Lalbagh kind of a thing. So requested me, and I got an opportunity from the my colleagues also. So they have helped me a lot. I have set up my clinic at Lalbagh also, Dadar, and multiple options there. आपको अगर संजय एल से कंसल्ट करना है डॉक्टर संजय से, तो आप जा सकते हैं वर्ली, दादर और लाल बाग। डॉक्टर संजय, ये बताइए कि व्हाट टाइप ऑफ पेशेंट्स कम विद बैक पेन। See, majority patients in my OPD clinics are mainly of two types. Either it could be a back pain or knee pain, as you are all aware of that. Back pain patients, the causes is different. They come, office going people also come for the back pain. Elderly people also come for back pain. But the cause is different. For the office going people, it is more of a mechanical back pain. In elderly people, it is more of degenerative, aging related people. Most of the nowadays, what happens is because of the office work and everything, after the corona, it is a work from home culture. There is a what we call as a dual culture or mutual culture. Because of that, what happens, the while working on the laptop, the most of the people have observed is they are not using a proper posture, what we called as an ergonomics. Because of the poor ergonomics, because of the poor sitting position, some people they work throughout the day on the bed only, while sleeping also they do their work. This posture causes a mechanical back pain. So there are two, broadly if you can say, the back pain. One is what we call as an ergonomic mechanical back pain that we see in more of young or adult patients. The second type is elderly patients, that is what we call as a degenerative. That is because of the aging factor. So these are the two main types I see in my back pain. Can they prevent it, or the cure is the only solution? Definitely, prevention is always better than cure. What we say is the prevention will reduce the dependence on the drug. There are multiple preventive measures which we can do, and accordingly, they will have a good effect on this back pain. When they come to you, what is the procedure you follow? Every time it is x-ray, or just giving them some physiotherapy or the medicine? What is the course of action? Nowadays, what happens is elderly people they too come very late to us, because what they have a myth is if they are elder there will be a pain. Second is office going people also they don't get time. If I ask them to come in my OPD, they always ask me to whether you are available late night. If they come early, definitely there could be a preventive measures. If the pain is very chronic, we do find out the reason, actual diagnosis. We do
a basic couple of tests, X-ray and some blood tests, because as you all know that very common cause for young black back pain is low vitamin D3 level. They don't have a sunlight exposure as such in general, because the culture is 9 to 5 office job. That is a time when we used to expose to sun, but nowadays there is no time for a sunlight exposure. So due to that, I do couple of tests, basic X-ray and the blood test. Depending on that, we start with the conservative treatment for a couple of weeks. If it is not improved, then we go for the further radiological test, MRI, and further advanced blood tests. So, Dr. Saab is saying that vitamin D is very important. At the same time, early diagnosis is also very important. Prevention is better than cure. Similarly, I want to ask about knee pain. What are the causes for the knee pain? Again, preventive and cure. What is the process for that? Most common cause for the knee pain, as we all are aware, is a degenerative osteoarthritis. After the age of somewhere around 45 to 50, it is an aging factor. Normally, everyone gets a degenerative joint arthritis, but there are some certain stages. We label it from first 1 to 4 stages, depending on how the knee is affected. So, most common cause is degenerative osteoarthritis. मैंने देखा हुआ है कि कई लोग एक्सरसाइज के लिए स्टेयर्स चढ़ते हैं और वो कहते हैं हम 10 to 12 फ्लोर्स एंड ऑल दैट क्या वो नी को हार्म नहीं करता डेफिनेटली हार्म करता है। सी व्हाट हैपेंस इज देयर आर टू काइंड्स ऑफ एक्सरसाइजेस, व्हाट हम लोग बोलते हैं। वन इज नॉन वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस, वन इज वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस। आजकल जो भी एडवर्टाइजमेंट या जिम जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि दे डू अ मिलिट्री काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग, दे डू एक्सेसिव ट्रेनिंग, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक पॉइंट इज, अगर हमारा नी स्ट्रक्चर वाइज इट इज नॉट फिट, otherwise the basic tone is not good. If you try to do very weight bearing exercises, definitely it will hurt. Definitely there are three main things: climbing staircases or excessive use of staircases while doing exercise, or doing more of floor activities also will put more pressure on the knee, or a cross leg sitting. These are the three activities which put more pressure on knee. क्रॉस लेग आई शुड सिट दिस अगर आप डॉक्टर संजय को सुन रहे हैं इमीडिएटली अगर आप फॉलो करेंगे जैसे मैंने किया तो डेफिनेटली आपको क्योर की जरूरत नहीं पड़ेगी आप प्रिवेंट ही कर सकते हैं Exactly. Let me share how I have connected with Dr. Sanjay. My mother was 80 years old. जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि it's like a degenerative disease of the knees. But I would like to tell you, अगर आप डॉक्टर संजय के पास जाते हैं और जरूरी नहीं है कि वो आपको सर्जरी ही बोलें, क्योंकि मम्मी को किसी डॉक्टर ने सर्जरी बोला था एंड डॉक्टर संजय ने बोला कि नहीं, बिकॉज आप अभी चल रहे हैं, आप फिजियोथेरेपी लीजिए और ये जो कोर्स ऑफ मेडिसिन है ये फॉलो कीजिए तो आपको सर्जरी की जरूरत नहीं है. नाउ शी इज 85 years. शी इज परफेक्टली फाइन, इवन शी इज लिविंग अलोन. डॉक्टर साहब जैसे कि उन्होंने बोला भी, कोर्स ऑफ एक्शन भी बहुत सिंपल रखा हुआ है एंड आई एडमायर दैट. आप अगर जब भी इस चीज़ से करें और आप इस एरिया में रह रहे हैं दादर, लालबाग और वर्ली में, तो आप डॉक्टर संजय से जरूर आके कंसल्ट कर सकते हैं. डॉक्टर साहब सर्जरी जैसे है विच इज नाउअडेज वेरी कॉमन Yes. in knee surgery. So there are multiple different ways of the surgery or there is only one surgery? So it depends on which grade of osteoarthritis we have it. इट इज़ एक मिथ ये भी है कि अगर ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएंगे तो सब डॉक्टर बोलेंगे सर्जरी है. इट इज़ नॉट. तो नॉर्मली क्या है, देयर इज अ डेफिनेटिव इंडिकेशन फॉर द सर्जरीज. इट इज़ नॉट कि सब नी पेन्स या सब ऑस्टियोआर्थराइटिस नीड सर्जरी. इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेड, व्हाट काइंड ऑफ अ ग्रेड इट इज. एक मिथ ये, सर्जन के पास जाएंगे तो सर्जरी बताते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स कैसे है, दे ट्राई टू अवॉइड द पेन जाना डॉक्टर्स के पास. उनको ये लगता है कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो एक काइंड ऑफ अ बर्डन टू अवर चिल्ड्रंस. ऑलरेडी दे आर मच स्ट्रेस फॉर वर्क एंड एवरीथिंग, और इनको मैं एडिशनली बताऊंगा कि मेरे को नी पेन है, तो इट विल ऐड अ स्ट्रेस टू देम. तो उनको वो एक पॉजिटिव पॉइंट से वो लोग सोचते हैं कि नहीं हम बताएं. तो उससे क्या होता है, देर इज अ एडवांसमेंट ऑफ द स्टेज. इनिशियली जो सिंपल मेडिसिन या कुछ प्रिवेंटिव मेजर से ट्रीट हो सकता है, इट टर्न्स इनटू अ advanced structural change. The surgery has evolved from the conventional means without any support of advanced system. We used to judge on the basis of the x-rays and everything. Gradually it has turned to a computer based surgery. We used to feed our x-ray into computer and computer basis पे उनकी suggestion से we used to do the surgery. Now it has advanced to a robotic level. Robotic assisted knee replacement, what we call it as. So what we do is we feed our knee structure CT scan into our system, and based on that robotic and we plan together how much we have to do the surgery, what kind of surgery we need required. So it has advanced from conventional level to now robotic level. Initially when I started 10 to 15 years back, it was purely a conventional type.
after 3 to 4 years of my practice, that computer based surgery has evolved. And now since last I think 3 to 5 years, the robotic surgery has become prime treatment for this knee replacement surgery. सो बहुत लेमन वाला क्वेश्चन पूछ रही हूँ। रोबोटिक मीन्स हमारे दिमाग में आता है रोबोट यहाँ पे है, डॉक्टर यहाँ पे, इज इट दैट? इट इज़ नॉट। क्या है, ये सबको ऐसे ही लगता है कि ये रोबोटिक सर्जरी है तो रोबो करता है सर्जरी, फिर आप क्या करते हो? यूज़ ऑफ रोबो इज़ जस्ट टू एनहांस द लेवल ऑफ स्किल्स ऑफ सर्जरी। तो क्या होता है, कुछ चीज़ें ह्यूमन एरर हो सकता है। व्हेन वी डू सर्जरी देयर कुड बी अ मिनिमल ह्यूमन एरर। इफ यू सी द लॉन्ग टर्म रिजल्ट, जो अभी तक का जो पेपर्स है, क्लिनिकल रिसर्च लॉन्ग टर्म पीरियड, 10 इयर्स फॉलो में डिफरेंस कुछ भी नहीं। रोबोटिक करो या कन्वेंशनल करो, बट ओनली द एडवांटेज ऑफ रोबोटिक इज जो मिनिमल पॉइंट ऑफ एरर होता है। सपोज बोन की जो लेयर को हम रिप्लेस कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट सर्जरी। सपोज इफ आई हैव टू रिप्लेस 12 mm, ऐसा हो सकता है कि वी आर रिप्लेसिंग अंडर रिप्लेसिंग मे बी 10 mm, और वी आर ओवर रिप्लेसिंग मे बी 16 mm। वो एरर को मिनिमाइज करने के लिए व्हाट वी डू एज अ रोबोटिक, बट स्टिल रोबोटिक हैज टू बी डन only after trained conventional surgeon. It is not directly अब robotic कोई surgeon करता रहेगा, it is not that good, because once you have to used to the conventional technique, then only you can go to the robotic surgery. And robotic, just for 1 or 2 steps the robotic work is done, otherwise completely is done by a surgeon only. It is not a distant surgery. कुछ अभी आपने देखा रहेंगे, कुछ गैस्ट्रिक सर्जरीज आए, वो डिस्टेंट सर्जरीज है। यहाँ पे कोई रोबोट करता है, दूसरा कोई सर्जन एडवाइस करता है, बट स्टिल रोबोटिक इज असिस्टेड बाय वन ऑफ द सर्जन। इट इज नॉट इंडिपेंडेंटली, रोबो कभी नहीं करता। ऑब्वियसली हमें भी समय के साथ चलना Exactly. चाहिए, जैसे जैसे साइंस इवॉल्व होता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मेल एंड फीमेल व्हेन इट कम्स टू बैकएक और द नी? Female ratio is more comparatively for backache arthritis. There is a clinical evidence for that, because we all know post-menopausal there are many hormonal changes in the female. Second thing is, till now also the females get ignored for the medical problem. नॉर्मली क्या है, मेल्स जो रहता है उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अभी भी स्टिल नाउ इन आवर कम्युनिटी दे आर लेबल्ड एज अ ब्रेड अर्नर्स, सो उनको क्या है, पहले प्रेफरेंस देते हैं और ज़्यादा करते हैं। और इन जनरल ऑल्सो इंडियन हाउस वाइफ्स आर मोर कंजर्व, तो वो ज़्यादा करके ओपन नहीं होते जल्दी। कुछ पेन रहा तो उनको लगता है कि जो हो जाएगा ये तो अभी तो इसके लिए फीमेल रेशियो इज मोर इन एडवांस स्टेजेस, एंड देयर आर टू रीजन, वन इज पोस्ट मेनोपॉजल एंड सेकंड इज दिस बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस। आपने बहुत सही बोला, पोस्ट मेनोपॉजल देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस एंड लॉट ऑफ things associated with that which comes to women and they don't realize it. Exactly. What would you suggest to those women out there how they should proceed? Most important is a early postmenopausal. So once after the couple of years, once the hormonal changes are balanced, उसके बाद उतना ज़्यादा effect नहीं होता है. When there is a early postmenopause, what we call it, there is a drop of estrogen level. So there is a hormone which is called as estrogen. तो estrogen level का drop हो जाता है, and because of that the bone density becomes less. So इसके लिए we should have a adequate amount of supplements. We should have a adequate amount of basic exercises. I don't say कि सबको जिम जाना चाहिए ऐसा, but basic जो घर में भी कर सकते हैं, we take 5-10 minutes का time, those kind of exercises and adequate amount of sunlight. These three things will solve our postmenopausal problem. As you heard कि आप अगर मेनोपॉजल उसमें है या हो गया है या होने को है, तो आप प्लीज़ अपना ध्यान रखें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपका ही काम हैम्पर होता है। बीइंग अ Exactly. वुमेन आई कैन से दैट हमें ही घर को देखना है, और अगर हम आगे किसी का ख्याल कैसे रख सकते हैं। सो आपको अपना ख्याल ज़रूर रखना है, और कोई भी कंसल्टेशन है आप डॉक्टर संजय से कर सकते हैं। संजय, वन मोर थिंग आई वुड टू आस्क एज अ वुमेन कि हम कहते हैं ना कि फूड हैबिट्स, क्या वो भी हमारे इसको अफ़ेक्ट करते हैं? हमारी अच्छा खान-पान होना चाहिए, जैसे आपने फूड सप्लीमेंट्स तो बोला, बट रूटीन में भी जैसे होता है, वुमेन्स टेंडेंसी होती है कि सबको खिला देना, हमें कम खाना। डाइट के हिसाब से देयर शुड बी एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, एडिक्वेट अमाउंट कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स, एवरीथिंग। एंड नॉर्मली इंडियन वुमेन्स फास्टिंग ज़्यादा रखते हैं। रिचुअल्स ऐसे है कि at a stretch for 15 to 20 days they take only water or a liquid fluid. So during this period, at least fasting हमारे rituals है, we should follow it, but during this period we should try to have a adequate amount of protein, adequate amount of carbohydrates. तो ये deficiency की वजह से definitely there is a muscle wasting होता है। न्यूज़ में भी है, हंगर स्ट्राइक रख रहे हैं सब लोग, तो उसके वजह से भी क्या होता है, वेट कम होता है, मसल मास कम होता है। आई वुड रिक्वेस्ट कि एटलीस्ट प्रोटीन डाइट एडिक्वेट होना चाहिए नॉर्मल डाइट में। सिटिंग, इज इट गुड टू सिट ऑन द फ्लोर और ऑन द चेयर? जैसे आपने क्रॉस लेग तो बोला दैट आइडियली ये सब पेशेंट्स को मैं 4 चीज़ें कंपल्सरी बताता हूँ एज अ प्रिकॉशन, प्रिवेंटिव मेजर्स। वन इज वी शुड अवॉइड फ्लोर सिटिंग एज मच एज पॉसिबल। सेकेंड इज
we should avoid staircase climbing and कभी भी excessive staircase climbing. Third is floor activities, cross leg sitting और फॉरवर्ड बेंडिंग. तो ये 4 चीज़ें जो है इट विल अफेक्ट आवर बायोमेकेनिकली अपने नीज पे और एज वेल एज अपने बैक पे. बिकॉज फॉरवर्ड बेंडिंग हम बहुत करते हैं एग्जैक्टली. डेली रूटीन में, कुछ भी उठाना है. सो यू मीन टू से वी हैव टू सिट लाइक दिस रादर फॉरवर्ड बेंडिंग. forward bending. What is the how the science is going towards all these treatments and all that? How it's beneficial for the people, or is it earlier was a good because आप दोनों practices कर रहे हैं. ट्रीटमेंट जैसे मैंने बोला प्रिवेंशन इज ओनली द ट्रीटमेंट. व्हाट टिल नाउ द डिक्टम इज 80% इज अ ट्रीटमेंट इज अ प्रिवेंटिव, 20% इज अ मेडिसिनल पार्ट. अगर इफ इट इज इन अर्ली स्टेज, अगर कोई भी एडवांस स्टेज में आएंगे तो एनी ऑर्थोपेडिक सर्जन डजंट हैव एनी मच ऑप्शंस कि उनको ट्रीट या प्रिवेंट कर सके. इफ द एनी पेशेंट कम्स इन एडवांस स्टेज डेफिनेटली देयर विल बी अ सर्जरी एज एन ऑप्शन. बट टिल अर्ली स्टेज और मॉडरेट स्टेज डेफिनेटली प्रिवेंशन एक ट्रीटमेंट है. जैसे ये 4 चीज़ें मैंने बोला है. Because of the forward bending, normally we have seen it is kind of cracker pressure. जैसा नट क्रैक होता है वैसा प्रेशर पड़ता है. आई हैव सीन इन माय ओपीडी पेशेंट गेटिंग सरप्राइज कि मैंने बोला उनको कि स्पाइन का फ्रैक्चर हो गया. पेशेंट्स बोलते रहे मैं गिरा भी नहीं, कुछ भी नहीं, कैसे फ्रैक्चर हो सकता है. समटाइम दे टेंड टू हैव अ सेकंड ओपिनियन ऑल्सो. अरे दिस डॉक्टर इज सेइंग फ्रैक्चर बट आई डिडंट हैड एनी इंजरी एट ऑल बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ द बोन. अगर थोड़ा भी बेंड हुआ इट इज कॉल्ड द नट क्रैकर काइंड ऑफ इफेक्ट और उसके वजह से प्रेशर पड़ता है. when you sit on the floor there is a more pressure on the spine because our pelvic tilt to backwards. उससे क्या होता है अपना बैक पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है. एंड क्रॉस लेग में भी there is a more pressure on the knee. And second, the treatment definitely has changed. It has changed from normally there used to have more complications for any treatment, for any medicines also there could be a surgical treatment. Nowadays many people are afraid of the surgery only because of the complication, because of the pain कि post surgery ज़्यादा pain होएगा. Post surgery we don't know how is the outcome. So nowadays the science has evolved much that we are able to minimize the complication. Till now it is not nil complication, but we have minimized most of the complication and there are very good options of surgery also nowadays. सर्जरी से डरना नहीं चाहिए. अगर कोई ऑप्शन नहीं बचा और सर्जरी करनी है तो नाउ इतना एडवांस हो गया है कि आपको वो जैसे पहले होता था बेड पे रहना पड़ता था. रिसेंटली माय ब्रदर गॉट उसके नीज के हुए हैं, ही इज इन हिज 50s एंड बिकॉज ऑफ द वेट. और तो सेकंड डे से ही इज वॉकिंग, इज इन यूके, ऑब्वियसली एडवांस है. This is, I think, changes there because of the science and all. Exactly. So recently also I have done, was because of advanced stage, I have done a both knee replacement. So what we do is earliest we try to make a patient walk and stand. So with the help of physiotherapy we made a patient to stand and walk the same day in the evening. The son got surprised that it is that fast you can able to walk and stand. We got before the surgery the entire family was much afraid of the surgery, but because the patient was in a severe agnostic pain, the patient himself told me that I want to go for the surgery. But they got surprised just seeing that on the same day the patient able to walk and stand. To ask, what is the food supplements? How you can choose the best? If you go with allopathic point of view, as such, there are no specific medicine for the any kind of a arthritic change or a structural change. What all medicine as of now we have is only a to strengthen the muscle, to strengthen the knee, and strengthen the joint. All these are supplement medicine. My 15 years of experience, these are all supplement will work only when we take a preventive measures. Some people what they say is ki I have took medicine for 3 months, but still there is no effect. Supplement will work only when we add our preventive measures. That's it. You have to be the exercise, या ये जो भी आपने बोले वो 4 things, Exactly. we should avoid that. Yes. With the supplements. Exactly. It can cure Exactly. without any surgery and all if it's in a preliminary stage. If it is in a preliminary stage, we can slow down, heavily slow down the process of degeneration. Regeneration process is an aging process. We cannot stop that as such, but we can heavily slow down the process of degeneration gradually. So if you ask me what there are 3 main things. One is we should maintain the muscle tone and muscle mass. Second is we should be watchful our on weight. If it is a overweight, then also there is a more pressure on the our. And the third is our diet. That's it. आपने बोला कि weight and this food, these Yes, are the habits you have to take care of. Yes, sir. Second thing, कैसे पता चलेगा कि that I have some problem in knees, like से होता है छोटा सा पेन होता है फिर वो सबसाइड हो जाता है. Exactly.
हाउ कैन इट्स लाइक कि अभी मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना है, वो स्टेज कैसे पता चलती है? This is a main problem of not going to a doctor. After the age of somewhere around 45 to 50, definitely degenerative change चालू हो जाता है. And it is not continuous persistent pain. Sometimes it could be like a intermittently pain. If you're doing a exertional work और pain हो रहा है and it is getting subside. अगर frequently ये होता रहेगा, then definitely we should consult a orthopedic surgeon for that. Frequent changes is a sign that our cartilage starting degenerating. Initial stage पे if you try to take a proper treatment for that, definitely जैसे मैंने बोला, it will be slow down. Whenever there is an intermittent persistent pain, then we have to visit a doctor. It will degenerate. That cartilage will, with the age, it will get. How our hair graying of Yeah. hair happens, Yeah. similarly the cartilage will degenerate. We Okay. cannot stop graying of hair. Similarly, we cannot stop the degeneration also, but we can slow down. I have seen many people. I have shared my mother's case only, that 80s she has not gone. So in that, how it is? Degenerate हो रहा है? If it is till the stage of stage 3, definitely we can prevent it with the exercises. We can prevent it with some preventive measures. We can prevent it with weight control. So in our case, it is a combination of these three things, because she tried to do exercises, she tried to follow my advices. So all these have helped to develop. It is a load redistribution. Whenever we walk or stand, it is not only the joint or bone works. It is a comprehensive work. It is the bone works, joint works, and muscle. It is a comprehensive work. Whenever the muscle gets strengthened, there is a muscle load redistribution. Because of the redistribution of the load, then the pain and symptoms comes down. जैसे आपने बोला muscles, even with the age, muscle also lost their flexibility or something. Normally, if some patients comes after 90s to me, saying that I have osteoarthritis, go for the surgery. But I definitely suggest them, at the after the age of 90, the muscle, there is a muscle decrease in muscle tone. If we do surgery also, there is the recovery period is too long. So definitely as the age goes, muscle tone decreases. So regular intermittent exercises, regular supplement medicine, regular sunlight exposure, all these will maintain our muscle tone. And walking is the best for preventing measures में अगर exercise बोले तो? Walking as such will improve the metabolism of our overall body, one. Second is walking will increase the uh, muscle tone, but there are very dedicated exercises which will strengthen the knee muscles. There are dedicated exercises which will strengthen the back and abdomen muscle. There are different set of exercises for particular to the back pain and the knee pain. Walking definitely will help for a overall metabolism, but if you want the specific exercises for the knee, and we should visit to a physiotherapist. They are expert for that. But sometimes what happens, if I try to advise exercises to a patient, they themselves do at home, but by seeing a YouTube or something else. But those exercises are not subjective. Every individual is different. Every patient is different. Initial phases, whenever we want to do exercises, starting exercises, we should be done under guidance of a physiotherapist. We should not do by ourselves. When you suggested it to my mom, I called a physiotherapist Exactly. at home, and she has suggested. Now she's following those, Exactly. and I think that's why she's able to walk, and Yes. daily chores she can do it. Anything to start off, we should be under the guidance of expert. We should not start by our oral self. Sometimes what happens, due to we don't know how much stress we have to do it. If you're doing over exertion, then there will be a side effects of that exercise also. 12 years of our journey of as an orthopedician. How many patients you have far cured them and helped them to regain their daily life as either surgery, without surgery? There are there could be many thousands of patients that were treated as such in the last 12 years. But there are a couple of patients I would definitely share with you. Basically, if as we are talking about the surgeries and knee pain, there was one patient of knee pain, severe osteoarthritis. She has not come out of her society for at least 2 to 3 years, only because she has a severe pain, and because of severe pain, mobility decreases. So they become overweighted. Because of the overweight, because of the severe degenerative maybe 2 to 3 years, more than that, वो सोसाइटी के बाहर आई ही नहीं, बिकॉज ऑफ द फियर कि मेरे को पेन हो रहा है एंड बाहर जाएंगे तो मैं गिर जाऊंगी और समथिंग. एंड आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स दे हैव कंसल्टेड मी कि उनके हस्बैंड जो थे, दे वांट टू गो आउटसाइड, शी यूज्ड टू रेफ्यूज हर कि हम ना बाहर नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ द पेन एंड एवरीथिंग. उनके हस्बैंड ने बोला कि आई वांट अ सोल्यूशन फॉर दिस, तो देन आई एडवाइज सर्जरी फॉर दैट. आफ्टर सर्जरी एंड एवरीथिंग वेंट स्मूथली, सब कुछ हो गया. Every time the hospital was just
beside our residence. तो हॉस्पिटल से रेसिडेंस आया, बस खत्म हो गया स्टोरी. एंड आफ्टर 2 to 3 weeks, I asked her to we should come to my clinic, and they used to stay in Dadar, and they used to come, he has to come to my clinic. तो ये जर्नी जो था from the home to clinic, after she came to my clinic, she started crying. मैंने बोला अरे क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ, what happened to you? So she was saying कि मैं 3 to 4 years, maybe more than that, मैं बाहर नहीं आई हूँ. And the Mumbai has changed everything. There was no bridge, the bridge बन गया. There was no towers, वो tower बन गया. There was no garden, मैंने garden. ये सब चीज़ें मैंने इतने साल से देखा नहीं. Oh my God. शी वॉज वेरी हैप्पी कि मैं ये सब देख पा रही हूँ. तो दैट वॉज अ वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी कि मेरे को लगा कि एंड कि द वन हु वाज नॉट एबल टू गो आउट बिकॉज ऑफ द सर्जरी शी वॉज एबल टू सी, एंड शी अप्रिशिएटेड दैट कि मुंबई इतना डेवलप हो गया क्या 4-5 साल में. तो दैट वॉज वन ऑफ द स्टोरी. एक स्टोरी था. एंड सेकेंड आई वुड टू शेयर द स्पाइन का स्टोरी. वन ऑफ द स्पाइन, he was a young guy around for 35 to 40 years, office going guy. एंड वो मल्टीपल जगह पे गया था. एवरीवन आई सजेस्टेड सर्जरी काइंड ऑफ अ थिंग. सो व्हेन ही केम टू मी आई थॉट इट इज 100% इंडिकेशन नहीं है सर्जरी का एज सच. देयर आर मल्टीपल अदर ऑप्शंस आल्सो. आई एडवाइस, ही वाज नॉट वेरी कीन फॉर द सर्जरी. एंड वो ऐसा केस था कि वी कैन डू कंजर्वेटिव मैनेज आल्सो. इट इज नॉट कंपल्सरी टू सर्जरी. So we have went for the conservative management and everything, and now he's very fit and fine. So it has been now around 8 to 9 years. Still now he intermittently comes to visit me for other patient, not for him. But these are two cases. And ये जो second cases में था, he was not much affordable. उनका family condition ऐसा नहीं था कि they should afford advanced surgery as such. So these are two. I would say कि एक तो जिसको surgery indicated है, we should do it. And those people जिनमें सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं, तो वी शुड अवॉइड इट. दो दीज आर द टू केसेस आई वुड शेयर विद यू. एक चीज़ आपने अभी जो बोला कि अफोर्डेबिलिटी, जो सर्जरीज़ होती हैं, इट कैन बी डन अगर ऑब्वियसली कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है बहुत एडवांस एंड ऑल दैट. इज़ इट उनके लिए ऐसी फैसिलिटीज़ हैं कि वो सर्जरी करा सकते हैं एट हाउ मच दे कैन अफोर्ड एंड ऑल? डेफिनेटली द गवर्नमेंट ऑल्सो नाउ हैज मेनी मल्टीपल प्रोग्राम्स जिनके अंडर वी कैन डू इट इन दैट प्रोग्राम. और जिससे जो नॉन एफोर्डेबल है, जो दे आर नॉट लो सोशोइकोनॉमिक जो है, we definitely we do normally nowadays. In the last 12 years we have done multiple cases जो non affordable है. In fact we have done a free of cost also, at personal level, at community level, with the help of much social workers, plus government also helping many schemes as such. But the only thing is what I find is some people they more disadvantage of this. They feel that scheme में जाने से surgery is not up to the mark. It is not that. But whatever the scheme we do it, the surgery is the same. Those who are non-affordable, we definitely do at personal level. We definitely do at community level. Those who are social workers, they help us. And some there are government schemes. So जिसमें हम कर सकते हैं. It is not every time everyone has to pay for the surgery. Those who are not affordable, definitely we help them. जैसा डॉक्टर संजय ने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि सर्जरी बहुत ही एडवांस और ऐसे बड़े हॉस्पिटल्स में हो तभी सक्सेसफुल होती है. सर्जरी होती है डॉक्टर्स के लिए कि वो आप अगर उनको आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते और वो जो आपको बता रहे हैं आप वहाँ से भी कराएँगे तो आपके लिए वो सक्सेसफुल सर्जरी ही होगी. जैसे आपने पहले बोला था बेंडिंग फॉरवर्ड, बेंडिंग एंड ऑल. मैंने बहुत केसेज़ अपने फैमिली में सुने कि समवन इज़ वेयरिंग सॉक्स और उनको स्पाइन में वो आया, या समवन इज़ क्या बोलते हैं टॉवल से पोंछ रहे हैं या समथिंग दैट. इज़ इट कॉमन और लाइक मैंने ही ज़्यादा सुनी है? Exactly. So after a certain age, maybe after 50 to 60 या say 70s में जब भी होता है, so definitely there is an entity what we call it as an osteoporosis. There is a weakness of the bone. So whenever, as I told you, कि intermittently pain रहा, persistent pain रहा, या तो pain which is not going with a normal treatment, definitely we should check our bone quality. In normal word, what we test is the density of the bone. What we call it as a bone mineral density. Short form it BMD scan बोलते हैं, which is a very simple test to do. वो एक सिंपल टेस्ट से अपने को पता लग जाता है कि हाउ मच वीक आवर बोन इज. एंड बेस्ड ऑन द स्टेज, अगर ट्रीटमेंट अगर बराबर से लिए तो ये सब चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाते हैं. तो द प्रॉब्लम इज मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स दे डोंट सजेस्ट BMDs. उनको लगता है कि ये नॉर्मल कैल्शियम विटामिन से कम हो जाने वाला है, क्योंकि आजकल तो लेमैन पर्सन विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कैल्शियम विटामिन लेना ही है करके. बट दैट इज नॉट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर द बोन वीकनेस. देर आर मल्टीपल ऑप्शंस नाउ. एडवांस, जैसे मैंने बोला, मेडिकल इज एडवांस.
देयर आर मल्टीपल ऑप्शन ऑफ इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट, मल्टीपल ऑप्शन ऑफ द स्प्रे। अगर उनको ज़रूरत है तो वी शुड गिव इट, दैट डिपेंड्स अपॉन आवर बीएमडी का टेस्ट। सेकंड इज़, आपने जैसे बोला कि डेफ़िनेटली तो बेंड करना ही पड़ता है। अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूँ सबको कि बेंड नहीं करो, तो आधे से ज़्यादा कम नहीं हो पाएगा। बट डेफ़िनेटली वो जो एक्टिविटी है, अगर जिम, आजकल जिम ट्रेनर्स भी बताते हैं हाउ टू बेंड एंड हाउ टू लिफ्ट, डेडलिफ्ट कैसे करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम डेडलिफ्ट में भी बहुत जन को अगर प्रॉपर पोस्चर नहीं रहा, तो देयर इज़ अ इफेक्ट ऑन द बैक। द लिवरेज, व्हेनेवर वी बेंड, द लिवरेज हैज़ टू कम ऑन द हिप। नॉर्मली क्या होता है, द लिवरेज नॉर्मली जो एक्टिविटी करते हैं, द लिवरेज कम्स ऑन द लोअर बैक and that is the problem. So whenever we try to bend, we should try it from our hip joint rather than our lower back. Normal tendency everyone will do with the lower back, and but after certain age we should try to do the leverage from the hip joint. That is all. Whenever the deadlift also, that if it is a good trainer, he will say that the leverage has to be from the hip joint rather than lower back. So when you are saying leverage means it should you should feel Bending fulcrum at the hip joint hip rather joint. than the lower back. Okay. Consciously we have to do Exactly. that. Let's go with rapid fire. Sure. There are few questions people wanted to quick answers of that. Exactly. So just tell me one habit you wish every Mumbaiker to drop. Continuous sitting at one place. So prolonged sitting will affect our spine health and knee health. So what is the interval you will suggest? See, normally we can ask them to do it every 1 hour. We should take a break of 5 to 10 minutes. What is the one myth for the knee and back pain you would to burst? Every cracking sound is a disease. It is not that. Most of the majority young people, they say my joints are cracking. Might be something disease part. It is not. Cracking is also a normal entity of our joint. Yeah, we sometimes when we are doing this, we Some think sound that from the sound joint. is as a. So people are afraid कि अरे cracking sound हो गया तो अभी कुछ मेरे को सर्जरी लगने वाला है. It is not. If you had 30 seconds with someone who has been ignoring their knees for pain for months, what would you say to them? I think we should not ignore any kind of pain in the knee or any joint that will lead to a simple treatable medical entity to a chronic structural defect. So don't ignore simple pain. So whenever there is a simple pain, try to visit a doctor. And one more advice what I will give is simple stretching exercises will keep our muscle healthy and joint. Exercise, if I say Surya Namaskar is good? The Surya Namaskar is one of the best yoga asana. We should do it, provided there is no medical problem of knee and back. In yoga also, many of the yoga instructors also, before doing Surya Namaskar, they do ask whether you have a back pain or knee pain, that we can modify the asana accordingly. So Surya Namaskar is one of the best yoga asana. We should do it if there are no medical problem. This is the question I want to ask because I know how people take your appointment, and after watching obviously my episode, people will want to come to you because the way I have explained and the way you have narrated many things to easy care of their pains and regular exercise and everything, how they can take your appointment, and if they are in Dadar or Lalbagh, is it same or is it different? It is same. So you can simply visit my website, dr.sanjay or Pace Ortho Clinic. So there you have a very easy way to take my appointment. You are Dr. Sanjay. It's lovely talking to you and getting so much insight of knee pain and back pain. This is the very small part which he has shared. Definitely, we will come with the more insights for this. And if you have any questions, you can give your questions. And in our next episode with Dr. Sanjay, we will definitely cover that. And thank you so much, Dr. Sanjay, for coming on our podcast. Thank you much for calling me. And hopefully this जो majority back pain and knee pain, the people might get awareness about this. Thank you. Thank you. Thank you.